हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं पुडेंडल कैनाल या एलोक्स कैनाल या फेशियल कैनाल के बारे में। ये कैनाल कहाँ लोकेट होती है? lateral part of the ischiolacteral fossa. So this is the diagram of the ischiolacteral fossa. So this is the lateral part of the ischiolacteral fossa. 2.5 centimeter above the ischial tuberosity. So this is the ischial canal. Ischial canal is known as facial canal. What is the facial canal? It is formed by the splitting of lunate fascia, yeah, by the separation of obturator fascia or the lunate fascia. So this is known as a facial canal, located on the lateral part of the ischiolacteral fossa. So this is the diagram of ischiolacteral fossa. This is the medial side, this is the lateral side of the ischiolacteral fossa. हम बात करते हैं pudendal canal. What are the content of the pudendal canal? So these are the pudendal nerve. So this is the pudendal nerve. And these two are the internal pudendal vessels. That is the internal pudendal artery and vein. Okay, the content of the pudendal canal. अब इसी को इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे. So this is the pubis and this is the ischium. This is the ischial tuberosity. You can say the spine, ischial spine. Okay. So this is the ischium. Sorry, pubis, body of pubis. This is the ischium. This is the ischial spine. This is the greater sciatic. So the ischial spine, there is attachment. So there is a sacrum. This is a sacrum. The coccyx. So the attachment of from ischial spine से लेके coccyx तक is the sacrospinous ligament. So the attachment of sacrospinous ligament. The sacrospinous ligament. From ischial tuberosity, there is a sacrotuberous ligament. This is the sacrotuberous ligament. The sacrotuberous ligament. This sacrotuberous ligament convert the greater sciatic nerve and lesser sciatic nerve to the greater sciatic foramen and lesser sciatic foramen. So this is the lesser sciatic foramen, this is the greater sciatic foramen. And the ischial is the pudendal canal is formed 2.5 above the ischial tuberosity. So it is a continuation from the lesser sciatic foramen. Okay. So this ischial canal, this is the pudendal canal, is continuation from the lesser sciatic foramen. And कहाँ होती है? So this is the deep pudendal space या pouch. Is a deep pudendal, perineal, deep perineal pouch. So स्टार्ट कहाँ होती है आपको? लेसर सियाटिक नर्व से. एंड कहाँ होती है? लैटरल एंड ऑफ डीप पेरिनियल पाउच में. सो दिस कैनाल इज नोन एज अ फेशियल कैनाल. ओके, सो दिस कैनाल इज अ फेशियल कैनाल. सो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ फेशियल कैनाल और द pudendal canal is the up to the pudendal nerve. Pudendal nerve is कहां से आते हैं? यहाँ पे पेल्विक रीजन से आया. फॉर्मेशन कहां से होती है? S2
S3 and S4 के डेंटल रमाई से कौन सी बनती है यहाँ पे पुडेंडल नर्व, जो पेल्विक रीजन से आएगा, कौन सा, बिलो टू द पाइडिफॉर्मिस मसल्स, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में जाएगी, और बिहाइंड द इसियल स्पाइन, बिहाइंड द इसियल स्पाइन इट इंटर इनटू द लेसर सियाटिक फोरामेन। आफ्टर दैट ये कहां चले जाएगी, पुडेंडल कैनाल में। सो दिस इज द internal pudendal nerve. Lateral to the pudendal nerve there is a internal pudendal artery. किसकी ब्रांच है यहाँ पे, इंटरनल इलियक आर्टरी, ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, lateral to the pudendal nerve, that is the internal iliac artery. Again it passes behind the ischial spine to enter the lesser sciatic foramen, and this will become a internal pudendal artery. And lateral to the pudendal artery, this is the internal pudendal vein, जो इंटरनल इलियक वेन जाके ट्रेन जाए, कौन सी, इंटरनल पुडेंडल वेन. इट इज द कंटेंट ऑफ द पुडेंडल कैनाल. नाउ अगर इसी डायग्राम को हम यहां देखते हैं इस कंटेंट के बारे में, सो हियर इज अ पेनिस, दिस इज द स्क्रोटम. ओके, अगर यहां ड्रॉ करें, सो दिस इज द प्यूबिस, ईसियम. ओके, सो हियर इज अ पुडेंडल कैनाल. थोड़ा इसको लार्ज कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे. सो हियर इज अ पुडेंडल कैनाल. अब पुडेंडल कौन सा बात होती है यहाँ पे, सबसे पहले पुडेंडल नर्व. पुडेंडल नर्व की फर्स्ट ब्रांच टुवर्ड द रेक्टम, known as a inferior rectal branch, inferior rectal nerve, supplying the muscles, that is a external sphincter muscles and the skin around the penis. So this is the inferior rectal nerve. Second branch in the canal is give a peroneal branch. Okay. This peroneal branch give a branch toward the scrotum known as a posterior scrotal branch. Scrotal branch. Posterior scrotal branch, and also give a muscular branch. So this is the muscular branch. Okay, which supplying the muscle of the जेनाइटल. ठीक है, जेनाइटल मसल्स सप्लाई करने से मस्कुलर ब्रांच. तो दिस इज द मस्कुलर ब्रांच. एंड दिस पुडेंडल नर्व कंटिन्यू पासिंग टू द डीप पेरोनियल पाउच टू द रूट ऑफ द पेनिस, known as a dorsal nerve of penis in male and clitoris in female. यहाँ पे स्क्रोटल बेस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांच, दैट इज द पोस्टीरियर लेबियल ब्रांच इन फीमेल. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व. नाउ द पुडेंडल आर्टरी. So pudendal artery give a first branch, that is the inferior rectal branch. Okay, same name, that is the inferior rectal artery. Second, the peroneal artery, not peroneal artery give a posterior scrotal artery or labial artery. And the muscular branches. So this is the muscular branch.
and it continue toward the penis, give a artery to bulb of penis or bulb of urethra. Artery to urethra. Second is the artery to urethra. Third is the deep artery of penis. Deep artery of penis or clitoris in female. That is deep artery of penis in male and clitoris in female. Dorsal artery of penis in male, dorsal artery of clitoris in female. Dorsal artery of penis or clitoris. So this is the pudendal nerve and pudendal artery and the pudendal canal, and the pudendal vein accompanying the artery, and which is the internal iliac vein. So this is all about the pudendal canal. Thank you for watching this video.